Hello friends, welcome back to UPSC-Ethics and Integrity Online. Be your dream. आज के लेक्चर 26 में हम एक नए मॉरल थिंकर के बारे में जानेंगे. It is a very small topic related to Epicurus. We will know what basis he has kept to define ethicality and ethicality in action. And also we'll know why density and duration is very important to Epicurus. But before starting, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notifications. So, without wasting your time, let's start. Moral Thinker 10, Epicurus. He was a Greek philosopher, and his philosophy on ethical life is same as Socrates, Plato, and Aristotle, which is ethical life means happy life. And his philosophy is based on hedonism, means ethical life should be pleasurable. Pleasurable in the sense with respect to your body. Hedonism is related to self, self pleasure. Okay, but there was some difference, and the difference was the two premises which he has discussed about ethicality, which I have discussed before also. वो क्या था? Intensity of happiness and duration of happiness. Let's see what he speaks about intensity of happiness. By intensity, he is referring to active pleasure, not passive pleasure. Active मतलब आप feel कर रहे हैं. What is mean by that? The number of happiness which is experienced by human senses. मतलब आपके senses जो happiness है, जो joyfulness है, कितने ज्यादा या कितने टाइप में वो फील करता है. तो उसके बारे में ये बोलते हैं कि आपके ह्यूमन सेंसेस जो है एक्सपीरियंस तो करेंगे, इंटेंस हाई करेंगे, बट ये टेम्पररी होगा. एंड ये क्या करेगा? आपको स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, पेन, गिल्ट उसके बाद फील करने देगा. जैसे कि आप एग्जांपल देखें, ड्रग्स. जैसे कि ड्रग्स है, आपको इंटेंस प्लेजर देता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट जैसे ही आपने वो ड्रग्स का जो ड्यूरेशन होता है वो खत्म हो गया, तो उसके बाद वो क्या करता है? आपको एंगर, एंजाइटी देना चालू करेगा, एंड यू विल फील वेरी बैड, अनहैप्पी, एंड दिस विल लीड टू अनएथिकल एक्शंस एज वेल. तो इंटेंसिटी पे ज्यादा ध्यान ना देके इन्होंने बोला यू शुड फोकस ऑन ड्यूरेशन ऑफ हैप्पीनेस. By duration, he says that there are certain type of happiness which are experienced by human. They may not be intense, but the duration is quite long and permanent in nature. And इससे रिजल्ट क्या होता है? आपके अंदर फियरलेसनेस आता है, एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेसलेसनेस आता है आपके लाइफ में. एंड यही लॉन्ग ड्यूरेशन हैप्पीनेस आपको अच्छा या मोर एथिकल बनाता है, एंड आपको इंटेंसिटी से ज्यादा ड्यूरेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. Thereby, any action which is devoid of stress, pain, suffering is ethical action. Epicurus theory on ethicality is based on two premises: intensity and duration. इंटेंसिटी पे ध्यान ज्यादा नहीं देके एक मीडियम, एक लेवल होना चाहिए इंटेंसिटी का कि आपको हैप्पीनेस मिले, बट ड्यूरेशन लॉन्ग होना चाहिए. उस हिसाब से ही आपका एक्शन होना चाहिए. ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन्होंने बात किया हुआ है. सो होप आपको सब समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट हो या सजेशन हो या कुछ कमेंट करना हो, प्लीज लेट मी नो. आई विल cater to that. Okay, so thank you for watching and have a nice day.